आप बुक में अपने देखेंगे टेबल 1.3 में दिखाया गया है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो जस्ट एक एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे क्या यूज़ होता है। एंड इफ़ यू आर वाचिंग इडली, यदि आप इडली देखते हैं तो कैसे बनेगा। इडली के लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, राइस, उड़द दाल, बिट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दैट वी नीड। यस, लेकिन ये इंग्रेडिएंट का सोर्स क्या है, ऑल वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स। ऑल वी आर गेटिंग, इफ आई एम मेकिंग एन ईट तो हमें क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, राइस चाहिए, उड़द दाल, इट्स एन अ काइंड ऑफ पल्स, सॉल्ट एंड वाटर। और ये सब कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज दे आर कमिंग फ्रॉम द plants. Now ingredients in the table 1.3, ingredients used to prepare food items and their sources in the table 1.3 if you'll see. And then food item like chicken curry, what we need, chicken and different type of cinnamon, there is black pepper and cloves, and you know that different kind of, I said that small spices we need to make. We need oil or ghee and water to make. So these are the important ingredients we need to make: chicken, spices, oil and water. And the chicken we are getting, the source is animal, and then oil and ghee, that oil is we are getting from the plants that we have seen, but we are getting ghee, that is ghee हमें कहाँ से मिल रहा है, we are getting ghee from cow milk or animal cow milk or buffalo milk से हमें animal में से घी निकलता है. So these are the chicken curry if you are making, these are the ingredients we need: chicken, spices, oil or ghee and water. And source क्या है इनका, चिकन का सोर्स है आपको एनिमल, और ये घी का सोर्स जो है आपको प्लांट्स और एनिमल. और स्पाइसेस ऑलरेडी यू नो दैट इसका जो सोर्स है, इसका इट्स सोर्स इज ऑल्सो अगेन द प्लांट्स, इट्स सोर्स इज प्लांट. एंड देन you know that water, it is available everywhere. If you are watching, if you are making kheer, so what are the things needed for kheer? We need milk, and these milks we are getting from animal. We need rice, and the rice we are getting from, you know, cereal plants. And we need sugar for sweetness, and the sugar, it is also that coming from, I said that, plants. So the ingredient for kheer, we need milk, rice, sugar, and they are coming from the sources of animals and plants. So what the conclusion we are getting? Plants are the source of the food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. So we are getting in a plants जो सोर्स होते हैं, और ये क्या क्या देते हैं, इंग्रेडिएंट्स हमें देते हैं जिससे हम लोग फूड बनाते हैं, दैट इज ग्रेन्स, दे आर गिविंग cereals, they are giving vegetables and fruits. We have also seen animals provide us with milk, meat products and eggs also. And there is cows, goats and the buffaloes are some common animals which give us milk. Cow gives, goats gives, buffalo gives, camel gives, so many other animals gives milk. So these are the, but main sources cow, goats and buffaloes. The animals that produce milk are known as मिल्च एनिमल्स. वो एनिमल जो कि मिल्क प्रोड्यूस करे, नॉन एज नॉट मिल्क एनिमल, रिमेंबर मिल्च. विच एनिमल्स? मिल्च एनिमल. मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, दैट यू कैन से लाइक cow provide milk, goat provide milk and buffalo provide milk. Now here you can see some milk producing animals are given here. These are cows, buffaloes, goats, camels, horse, etc.